सो आज है बहुत एक्साइटिंग डे बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन होगा तो मेरी गाड़ी गाड़ी चला रही हूँ। बड़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा पता नहीं है। थैंक यू। चलो उसको चलाने देते गाड़ी, कोई नहीं। अभी हम एंटर कर रहे थे उत्तराखंड बॉर्डर और ये है आपका रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए कोरोना का। आप टेस्ट है तो ठीक है, वरना अब तो उत्तराखंड में विदाउट टेस्ट भी आप एंटर कर सकते हैं। तो मयूर भाई अभी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट चेक, फिर हम मिलते हैं आपसे। Okay, so this is the place where we are going to stay. So basically this property belongs to my brother Mayur bhai. So ये sort of colony है नियर 7 ताल। चलो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ओके तो ये हमारी गाड़ी, ठीक है। एंड दिस इज़ द प्लेस गाइस, लाइक ये पूरी कॉलोनी टाइप की है। और सॉरी मेरे पास माइक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। हमारा है घर वो A5। और चलो मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ और पूरा दिखाता हूँ। मैं गाड़ी लॉक कर लूँ। दिस इज द स्टेयरकेस। वैसे प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और कोविड के टाइम सेफ भी है यहाँ पे रहना, बिकॉज अपना ही है। एंड खाना वाना भी हम दिल्ली से लाए हैं। अभी मैं जो गया था वो थोड़े ग्रोसरी शॉपिंग करने गया था और सब कुछ सामान ले आया है। वैसे दिस इज़ द प्लेस। बेटे पापा, यहाँ से व्यू ऐसा है कुछ। अब यहाँ थोड़ा पेंट का काम चल रहा है, मैं कोने जाके दिखाता हूँ। ये ऋषिका, ये मम्मी, ये मयूर भाई। ये है एक रूम,
दिस इज मास्टर बेडरूम एंड यहाँ से भी आप सॉकेट हो गए तो व्यू देख सकते हो। शाम को में ही बैठने वाले हैं। जैसे कि मैं बताया था पेंट का काम चल रहा है और अब मैं आपको ले जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। हम रहेंगे यहाँ पे बेसिकली मैं ऐसी का मयूर भाई। ये हमारे रूम से व्यू है। वॉशरूम और बेस्ट स्टार्ट दिखाता हूँ। तो आपको क्या लगता है कैसी जगह है ये प्लीज? सो दिस इज़ द प्लेस एंड अभी 6 घंटे की ड्राइव लगी हमें फ्रॉम दिल्ली टू सातताल। और झूठ नहीं बोलूँगा इतना अच्छा मौसम नहीं है, मतलब थोड़ी के बहुत धूप है। और वहाँ पे एक मयूर भाई का घर और बन रहा है ऊपर। अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। हमें मिल गई है बाइक की चाबी। ग्रॉसरी शॉपिंग। बाइक किस लिए मयूर भाई आपकी बाइक है? दिल्ली में बुलेट, यहाँ पे होंडा शाइन। तो पूरी बाइक उस पर जाएंगे शॉपिंग करने। भाई मैं आगे खुदा जाता हूँ। पुराना घर तो ये है मयूर भाई का जो घर बन रहा है अभी। किचन और ये भी कुछ सामान पड़ा है। ऐसे इट्स लाइक अ ब्रांड न्यू होम। ये है व्यू, यहाँ से डायरेक्ट भीमताल का व्यू मिलता है गाइस। और देख सकते हो आप और मेरी गाड़ी और मयूर भाई की गाड़ी और ये एक और रूम है। सो द डे वन इज जस्ट अबाउट टू ओवर एंड द टाइम इज नाउ 7 o'clock and we just reached our stay in Satal and then we went to the other property of Mayur bhai. Then we took a nap. I just woke up like half an hour ago. So we are just preparing for some bonfire here. And are you excited for the bonfire? Yes, I am. So this is our little setup for the bonfire. And it's a little setup for the elder people. Not for us. We are Sharif Bachas here. And here's the view.
आएगी आएगी आएगी। अरे भाई अच्छा भाई हेल्प कर रही थी ऐसे लाइट पकड़ के, मुझे पता नहीं था। मैं कह रहा इतनी अच्छी लाइटिंग कैसे हो गई। मैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा था एंड मैंने कहा बहुत अच्छी लाइट आ गई, पर मुझे नहीं पता था भाई हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू भाई। तो आज हम खा रहे हैं ये सब्जी, दिस इज मटन, पहाड़ों का मटन देखते हैं। वैसे ये होममेड है और चपाती और मीठे में कुछ नहीं है। ये लड़की आज मटन पता नहीं कैसे खा रही है, वैसे उबला चिकन खाती है। ठीक है तो अभी का हो गया है व्लॉग, ये मैं करूँगा खाना खा के खत्म, क्योंकि सोना भी है, बहुत टाइम हो गया है। ओके गुड नाइट। Closed doors, I'm a fool for your love.